Hey guys, this is Sagar from Test Your Life. I hope you all are doing well and जैसे कि आपको पता होगा मैं अपने चैनल पे नाउ वीकेंड व्लॉग्स बनाने की सोच रहा हूँ। अभी मैंने 2 ही व्लॉग्स बनाए हैं बट ऐसे ही वीकेंड व्लॉग्स मैं बनाऊँगा अबाउट मतलब क्या इंटरेस्टिंग आज मैं कर रहा हूँ। मेनली ऑन सैटरडे एंड संडे आई थिंक अबाउट टॉपिक एंड संडे वीडियो बनाऊँगा। आज ऐसा है कि लाइक 2 हफ्ते पहले ही मैंने एक बियर्डो से सामान मंगाए थे कुछ फॉर माई हेयर ग्रोथ एंड माई बियर्ड ग्रोथ तो ऑलरेडी है बट जस्ट टू मेनटेन बिकॉज छोटे बाल जब हो जाते हैं ना ये देखो तो यू हैव टू हैव लाइक सम काइंड ऑफ वैक्स सीरम और समथिंग और बियर्ड मेरी बहुत जल्दी ग्रोथ होती है तो आई नीडेड समथिंग। बियर्डो से पहले मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ अभी भी कर रहा हूँ कुछ बट अभी ख़त्म हो गए हैं तो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड सम न्यू प्रोडक्ट्स। सो इट्स लाइक इट्स 11:40 राइट नाउ सो आई बिलीव मैं अभी नहा के ही आया हूँ तो उसके बाद जब मैं यूज़ करूँगा और एक प्रॉपर आई बिलीव अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी चाहिए। अनबॉक्सिंग वीडियो बनाता हूँ, प्रोफेशनल बी रोल्स वगैरह ट्राई करूँगा। अगर अच्छी बनी तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट ऑन टू इट। Alright, so guys, so this is before using the product, before using any kind of product right now. This is how I'm looking right now. Before and after करके try करते हैं, maybe अच्छा कुछ हो जाए. Peace out. Subscribe. Alright guys, so that being said, वो unboxing मैं जो भी करी was amazing. So let me just overview with the products I have over here. So these are all from Beardo, right? It's a very good brand for hair and beard and mustache and all. Yeah, so मैंने ये मंगाया था मतलब it's been somewhere around 2-3 weeks उसके बाद आया है ये तो I just wanted कि अनबॉक्स कर लूँ. Let's go through it one by one. So जो मेनली आपको 2 कंपोनेंट दिख रहे होंगे यहाँ पे this hair wax, like these are the hair wax by Beardo and let me just zoom it a little. हाँ, तो these are very good. मतलब मेनली मैंने ये देखा, मैं टॉप 10 एक ब्लॉग था उस पर देखा था कि मतलब गुड स्मेल एंड गुड
स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला वैक्स कौन सा होगा. मेनली स्मेल, बिकॉज some of the hair products like for the men are like very not good with the smell अच्छी नहीं होती उसकी. तो this is the one it was at top 3 I believe, and it's by Beardo altogether. And good and smell बहुत अच्छी होती है. And plus this is by with argan oil. It's with argan oil, and yeah, it's a good serum. Heard a lot about this. And just groom matte, strong, smoother, shiner, made in India. So let's see if I can open this up quickly. Okay. So yeah, this is it's look like. It's good. I can see it's transparent and all, and sturdy bottle. How do you apply it? Okay, so this is so good. I like this pump wala thing. Nice. This is the one I've been using for a very long time. This is Godfather beard wash, and this is very good for the beard. It's like whenever you have it, it's like more very dense. If you have a beard, you can definitely clean it very easily with this one. And ये बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है मेरे को. And yeah, it comes with this bottle. इसको निकालना बंद करना है बहुत easy. काफ़ी सही है, मतलब थोड़े से में ही if you just pour it 1 or 2 drops, and if you just scrub it and put it on your beard, काफ़ी क्लीन हो जाता है फिर. So this is by Godfather Beard or Godfather beard wash. I like it a lot. Okay, so next up is this one. I believe I have used this one too. This is also Beardo Godfather beard oil light. Okay, why is it light? I don't know, but yeah, मतलब मैंने यही मैंने बहुत यूज़ करा है. Yeah, it's the same. ये वही है. But light लिखा पड़ा. I don't know why, but it's the same. मेरे वाले में light नहीं लिखा था पहले, but actually it's the same. This is also good. मतलब even when I just opened it ना, मेरे को इतनी चीज़ की fragrance आई है, मतलब इतनी अच्छी fragrance है इसकी. So I can use it all day, and it's very good. इसके जो ingredient भी हैं बहुत सही हैं. And wow, मतलब ये bottle बहुत it's like made of glass, तो थोड़ा ध्यान से रखना पड़ता है इसको, वरना तो ये एक ही बार में फूट सकती है. And it's like this, open up like this, and थोड़ा अभी तक बहुत डरा हुआ है. मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगा इसको, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू है इसकी. एंड आई डोंट थिंक सो मैंने वेस्ट किया, नहीं, ठीक है. दिस इज़ लाइक ओके बियर्ड ऑयल. ओके, सो बियर्डो का एक ग्रोथ ऑयल भी होता है, बट आई डोंट नीड अ ग्रोथ ऑयल. मेरी ऑलरेडी वेरी ग्रोथ अच्छी हो रखी है बियर्ड की, तो आई डोंट थिंक सो आई नीड मोर. बट विद दैट सेड, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है. दिस इज़ मुस्टैश एंड बियर्ड वैक्स. मतलब अगर मुझे किसी पार्टी वगैरह में जाना है तो आई विल एट दिस. आई कांट गो बिकॉज सम टाइम मेरी बियर्ड ना बहुत ज़्यादा टैंगल हो जाती है विद इवन अ कॉम्ब, तो आई नीड टू हैव यूज दिस वन. एंड इसके इंग्रेडिएंट भी अच्छे हैं. इसकी स्मेल थोड़ी सी डैम्प है, तो इतनी सही स्मेल नहीं है. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट्स. आई बिलीव यू कैन सी, है ना. This is like how I use my product. So this is looking so cool, and I don't know how to tell you. इसकी smell बहुत ही अच्छी है. The wax I used after using the serum, the smell of it was amazing, like amazing literally. तो and beard मैंने थोड़ा सा wax लगाने की कोशिश करी है, but ज़्यादा होने नहीं, because growth इतनी नहीं है. So this is how I'm looking right now. There. Subscribe, give a like. See you in the next one. Bye.